દેવતાઓ અને મોટા નાગોરૂપી કરોળિયા તેમાં જાળ બાંધી રહેલા છે. જલાયુ જાતિ 4 પ્રકારના પ્રાણીઓના સમરૂપી કીડીઓના ટોળાથી તે ભરપૂર છે. જેમ માળી અને તેની સ્ત્રી કોઈ સુંદર વિકસિત ઉપરની રક્ષા કરે છે, તેમ કાળ અને ક્રિયારૂપી દંપતી આ ત્રૈલોકી રૂપી ઘરની રક્ષા કરે છે. આ જગત પ્રતિદિન નષ્ટ થતું એમ ભાસે છે, છતાં પ્રવાહ રૂપે તે અદ્યાપી પર્યંત નાશ પામતું નથી. અહો, આ કેવી માયા છે! હું માનું છું કે આકાશ શૂન્યતાને તે કશું કરતું નથી, છતાં તે વૃક્ષ આદિની અધિક ઉન્નતિને રોકે છે. કેમ કે મહાન પુરુષ અકર્તા હોય છે, છતાં લોકો તેની મહત્તાને લીધે તેને વિશેષ કર્તૃત્વ આરોપી લે છે, જેની અંદર લાખો જગત લય પામી જાય છે અને પાછા ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. તે આકાશને શૂન્ય કહેવું એ અખંડિત પાંડિત્યને ધિક્કાર છે. આકાશ ઈશ્વરથી જુદું છે એવો ભેદ કોઈ ઉન્મત્ત થઈ ગયેલા વાદીએ કલ્પી કાઢે છે. કેમ કે આકાશની અંદર જ સર્વ જગતનો લય થઈ જાય છે અને પાછું તેમાંથી જ તે ઉત્પન્ન થાય છે, તથા તેમાં જ તે રહે છે. માટે ત્યારે શાસ્ત્ર સિદ્ધ ઈશ્વર લક્ષણ આકાશમાં જોવામાં આવવાથી તે જ ઈશ્વર છે, જેની અંદર અગ્નિથી ઉત્પન્ન થયેલા તણખાઓના સમૂહની પીઠે આ સૃષ્ટિની શોભા ઉત્પન્ન થાય છે, લયને પામી જાય છે, સ્થિતિને પ્રાપ્ત થઈ રહેલ છે અને વૃદ્ધિ હર્ષને પણ પામે છે. તે નિર્મળ આકાશ આદિ મધ્ય અને અંતથી રહિત છે, એક છે, મારા પોતાના સ્વરૂપથી ભિન્ન છે અને સર્વના કારણરૂપ છે એમ હું માનું છું. ઈશ્વર રૂપી કઈ બીજું કારણ એ ચિદાકાશથી જુદું નથી, જે પોતાના અંગમાં અપરિમેય સર્વ વસ્તુઓને અંદર ધારણ કરી રહ્યું છે અને જે ત્રિલોકી રૂપી મણીઓના વિશાળ जितना मोह डॉलर और भोगों में है, उतना प्रेम महाचिदाकाश में हो. महाचिदाकाश ही है. જેટલો મોહ ડોલર અને ભોગોમાં છે, એટલો પ્રેમ પરમ ચિદાકાશમાં હોય. પરમ ચિદાકાશ તેજમાં તેજ, જ્યોતિમાં જ્યોતિ. એના ક્લિયર ડાયરેક્ટ નોવેલ મીડિયા 00 નો કોમ્પ્રોમાઇઝ. જેટલો મોહ ડોલર અને ભોગોમાં છે, એટલો પ્રેમ પરમ ચિદાકાશ, પરમ જ્યોતિ, અખંડ જ્યોતિમાં હોય. તો એ તો પરમ ચિદાકાશ તેજમાં તેજ, જ્યોતિમાં જ્યોતિ છે. એના ક્લિયર. डबल रोल नहीं चलता, डबल रोल है ना. गंगा और गटर, गंदी गटर तो साथ में नहीं चलता. गंगा गंगा है, गंदी गटर कुछ नहीं है. कैसा है? चलो. ઈશ્વર રૂપી કઈ બીજું કારણ ચિદાકાશથી જુદું નથી, જે પોતાના અંગમાં અપરિમેય સર્વ વસ્તુઓને અંદર ધારણ કરી રહ્યું છે અને જે ત્રિલોકી રૂપી મણીઓના વિશાળ આધારરૂપ છે. તે આકાશ ચિદરૂપ છે, પરબ્રહ્મરૂપ છે અને મારા પોતાના સ્વરૂપથી પણ ભિન્ન નથી એમ હું સમજુ છું. તેની અંદર જગતનો બ્રહ્મ ઉદય અસ્ત પ્રાપ્ત થતો રહે. બહુ બ્રિલિયન્ટ હતા. એના ફાધર ઓફ ડે છે લગભગ. એ ભગવાનના માણસ જયેશ પ્રભુને ખબર એના ફાધર એવું સાંભળ્યું. એ થોડું વખત ચાલો પછી ટ્રાન્સફર થઈ ગયો તો ખબર ને. ત્યાં થોડો વખત પહેલા પુના હતા. તેની અંદર આ જગતનો બ્રહ્મ ઉદય અને અસ્ત પ્રાપ્ત થતું રહે છે. પર્વતના શિખર ઉપર આવેલી વનભૂમિમાં વનચર કોઈ સુંદર મનોહર વૃક્ષના ગહન પ્રદેશોમાં કામી ગીત ગાય છે અને નીચે ચાલ્યો જતો આ વિયોગી પથિક એ ગીતને સાંભળીને રસ વડે આકુળ થઈ જાય છે તથા ગાનાર તરફ ઊંચે જુએ છે. હે મહારાજ, પર્વતના શિખર ઉપર આવેલા વનમાં ઉન્નત વૃક્ષોના પલ્લવોથી છવાઈ રહેલું નિકુંજને વિશે વિયોગથી મરણતોલ થઈ ગયેલી વિદ્યાધરીની સુંદરી વિશ્વાસ નાખીને ગળગળી વાણિજ્યને ઉત્કંઠાપૂર્વક ગીત ગાય છે. આ નીચે ચાલે જતું પથિક તે ગીતને સાંભળે છે અને પોતે પણ નિશ્વાસ નાખે છે.
તે ઈંડોળાના હિંચકાની પેટે ચંચળ થઈ રહેલી પોતાની બુદ્ધિ વડે આગળ પગલું ભરી શકતો નથી, તે બીજા તેના અનુચરો પણ તેને ચાલવાની સંમતિ આપી શકતા નથી. પર્વતના શિખર ઉપર આવેલા વૃક્ષોના પલ્લવોથી છવાઈ રહેલી નિકુંજોને આપણી આગળ જ વિયોગથી દુઃખી થયેલી આ વિદ્યાધરી અશ્રુઓથી આકુળ થઈ ગઈ છે. તિલકની શોભાને ધારણ કરતી નથી અને નિશાસા નાખીને કરુણ ગાન કરે છે કે એના આપના ખોળરૂપી ઘર વિશે હું મંદ મંદ સ્મિત સાથે આપની હડપચી પકડી ચુંબન કરતી હતી. તે ચુંબન રૂપી રસાયણને સંભાળીને તથા તેના આસપાસને વારંવાર ગૂંટીને મેં આ હત્યારા વર્ષો કાઢ્યા છે. એ મહારાજ, મેં માર્ગમાં રસ્તે જતા આવતા જતા લોકોને મોઢેથી સાંભળ્યું છે કે આ વિદ્યાધરીનો પૂર્વજન્મનો તરુણ પતિ વિદ્યાધર કોઈ મુનિના શાપથી 12 વર્ષ સુધી વૃક્ષરૂપ થઈ રહ્યો છે. તે સંવત્સરોને જ ગણ્યા કરતી આ વિદ્યાધરી પણ તેને મળવાને ઉત્કંઠિત થઈને વૃક્ષરૂપી બની ગયેલા પોતાના તે પતિનો જ આશ્રય કરીને ગાન કર્યા કરે છે. હે મહારાજ, જુઓ, એ વિદ્યાધર આપણા અવલોકન માત્રથી શાપ મુક્ત થઈ ગયો છે અને વૃક્ષ ભાવને છોડી દઈને ઉઘડેલા પુષ્પરૂપી હાસ્યને ધારણ કરી રહ્યો છે. જુઓ, શાખાઓના આકારે દેખાતા પોતાના તેજ બાહુ વડે આલિંગન કરીને તે પોતાની પત્નીને કંઠમાં લગાડે છે. પર્વત રૂપી હાથીઓના વૃક્ષોરૂપી રોમાંચો જે પુષ્પોના સમૂહ રહ્યો છે તે શિખરોમાં જાણે વસંત ઋતુમાં પડેલા જળબિંદુઓના જેવા આકાશમાંથી મૂર્તિમાન તારાઓ જ ખર્યા હોય તેવા દેખાય છે. માછલાની પંખીઓના વેગવાળા ઠેકવાથી ઉછ્યા કરતી જળની લહેરોમાં ક્રીડા તથા શબ્દ કરતી ચપ્પલ ટોળી વડે મોઢાને માઇકનો મેળ ચપ્પલ ટીટોડીઓ વડે ભયંકર જણાથી પુષ્પોરૂપી શુક્લ વસ્ત્ર વડે શોભી રહેલી અને કાંઠાઓમાં તથા જળમય પ્રદેશોમાં રહેલા નિશંક મૃગો વડે ભરપૂર થયેલી આ કાવેરી, અહો, એ કેવી શોભે છે. એ મહારાજ, આ સુવેલ પર્વતના શિખરમાં નિર્મળ શોભાવાળી આ આખી કાંચનમય શિલા ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ પડવાથી તે દૈદીપ્યમાન થઈ રહી છે. ભરતી સમયે ચપળ થઈ રહેલા સમુદ્રના તરંગો તેની સાથે અથડાય છે ત્યારે શિલા બહાર જાણે વડવાલના તણખાઓ ચમકતા હોય તેવી દેખાય છે. પર્વતોની અંદર પાસે આવેલા ઘાઘા વાદળાથી ઘેરાયેલા સ્થળમાં રહેલા ઘરની સીમાના અંત ભાગમાં આવેલા વિકસિત નવીન વૃક્ષો વડે સુશોભિત અને ખાખરાના વૃક્ષો વડે આકાશ પર્યંત વીંટાઈ વળેલા આ નેસના ઘરોની શોભા આપજો. પર્વત પાસેના આ ગામડા સ્વર્ગનો પણ પરાજય કરી રહ્યા છે. તેઓ વિકસિત થઈ રહેલા પુષ્પો વડે અત્યંત શુભ્ર ફૂલની વાડીઓથી રમણીય છે. કોઈ ઉત્તમ પાત્રની પેઠે તેઓ મંદાર વૃક્ષોની અંદર અનેક પુષ્પ સમૂહને ધારણ કરી રહ્યા છે. તેઓ કરંડિયાની પેઠે મોરોને ધારી રહેલા છે. જળમય શીતળ પ્રદેશ વડે સુશોભિત છે. ભૈરવ જપ ખાવાના સ્થાનથી ઊંચા શિખર ઉપરથી નીચે પડતા જળસમૂહના વિલાસરૂપી વાદ્ય વડે મનોહર છે અને પ્રતિધ્વનિ વડે ગાજી રહેલી ગુફાવાળા વનોમાં ગાન કરી રહેલા મનુષ્ય વડે સુંદર છે. પર્વતની ગુફાઓમાં વિચરનારા અને શ્રેષ્ઠ તથા ગોંદરાઓમાં નિવાસ કરનારા ગ્રામજનોને જે કંઈ આનંદ મળે છે તે આનંદ નંદનવનમાં ક્રીડા કરતા દેવોને પણ મળતો નથી, એમ હું માનું છું. ગામડામાં રહેવાને લીધે તેમની પામર જેવી દ્રષ્ટા હોય છે, છતાં પણ ઉઘડેલા પુષ્પોની કળીઓના કોમળ પલ્લવોની અંદર છુપાઈ રહેલા તથા ગુંજાવરો કરી રહેલા મદાંત ભમરાઓને જોઈને તેમનું કામ ઉદિત થઈ જાય છે. ભમરાઓએ પોતાના હિંડોળા રૂપે કલ્પેલી લતાઓ વડે આકુળ એવા વન્ય વિશે બિલ્લ લોકોની સુંદરીઓ ગાન કરી રહી છે અને બિલ્લો તેમના મુખ પર દ્રષ્ટિ ઠેરવીને શૃંગારની ચેષ્ટાઓ વડે વ્યાકુળ થઈ ગયા છે. અને એ બિલ્લો શત્રુની પેટે નિર્દય થઈને મુગ્ધ મૃગોને સિદ્ધે મારતા હશે. ગિરિવરોના ઘન વનોમાં આવેલા ગામો શીતળતા અને સુગંધ નામના પોતાના અધિકોણથી ચંદ્રનો પણ પરાજય કરે છે, કેમ કે તેમાં અનેક પ્રકારના વિકસિત થયેલા પુષ્પોના સમૂહમાંથી સુગંધ શીતળતા આદિ સારને ખેંચી લાવનાર પવન વડે લતાઓના પલ્લવોને હલાવીને अनंत तरंगों दिखने पर भी आदि मध्य अंत में महासागर 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 ही है. तो अनंत दृश्यों दिखने पर भी आदि मध्य अंत में महाचिदाकाश 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 ही है. अनंत तरंगों उसकी चित्र विचित्र उथल पाथल दिखने पर भी आदि मध्य अंत में महासागर 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 ही है. वैसे अनंत सृष्टि तरंग
और उसकी चित्र विचित्र उथल पाथल दिखने पर भी आदि मध्य अंत में महाचिदाकाश 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 ही है, ऐसा ये निरूपण है। तो चित्र विचित्र जो अनंत तरंग और उसकी चित्र विचित्र उथल पाथल नहीं देखने की, सारा का सारा पूरा का पूरा आदि मध्य अंत में महासागर ही महासागर है। वैसे ये जो विवर्त जो है आभास मात्रा, ये सृष्टि तरंग, उसकी चित्र विचित्र उथल पाथल नहीं देख रही है। आदि मध्य अंत में महाचिदाकाश 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 ही है। क्लियर है? ऐसा निरूपण है, लेकिन पढ़ने से नहीं मालूम होगा, शब्दार्थ नहीं लेने का, मर्मार्थ लेने का। क्योंकि महाचिदाकाश ज्ञान प्रकाशता है, और ज्ञान है उसमें यदि ज्ञान ही है और यदि कोई कल्पना नहीं है या कोई भ्रम नहीं है या कोई मोह नहीं है तो वो महाचिदाकाश है। और यदि ज्ञान है वो कोई कल्पना करता है, कोई भ्रम करता है, कोई मोह करता है, तो वो कुछ नहीं है। कल्पना कुछ नहीं है, भ्रम कुछ नहीं है, मोह कुछ नहीं है। ज्ञान स्वयं महाचिदाकाश है। तो ज्ञान ही महाचिदाकाश की पहचान है। तो ये सब में जो ध्यानपना है, सर्वत्र जो ध्यानपना है, वो ज्ञान है, वो महाचिदाकाश है, वो चैतन्य है। ये सूर्य नारायण भगवान का प्रकाश है, सूर्यनारायण भगवान का प्रकाश है। तो प्रकाश है तो उससे दृश्य भी प्रकाशता है, लेकिन प्रकाश में दृश्य नहीं है। वैसे ज्ञान है, उससे दृश्य जाना जाता है, लेकिन ज्ञान में दृश्य नहीं है। ऐसा ज्ञान जो है यह महाचिदाकाश। ये सूर्यनारायण भगवान है तो वो उसका प्रकाश से पूरा दृश्य प्रकाशता है, लेकिन वो प्रकाश में कोई दृश्य नहीं है। वैसे महाचिदाकाश ये पूरा दृश्य प्रकाशता है, लेकिन उसमें कोई दृश्य नहीं है ऐसे। और वो जो प्रकाश है वो चैतन्य है, वो ज्ञान है ना। तो जैसे ये प्रकाश को कोई भी दृश्य के साथ न जोड़े तो सूर्यनारायण भगवान स्वरूप है। ये प्रकाश कोई भी दृश्य को प्रकाश के साथ न जोड़े तो साक्षात सूर्यनारायण भगवान स्वरूप है। वैसे ये जो प्रकाश है, ये जो ज्ञान है चैतन्य, तो इसके साथ किसी भी दृश्य को न जोड़े तो ये महाचिदाकाश, स्वयं महाचिदाकाश है। किसी भी दृश्य को ये ज्ञान प्रकाश, समझा ना, चैतन्य प्रकाश, स्वयं प्रकाश, उसके साथ प्योर कॉन्शियसनेस, उसके साथ न जोड़े तो ये जो ज्ञान है, ये जो प्रकाश है, चैतन्य है, स्वयं प्रकाश है, ये स्वयं महाचिदाकाश है। क्लियर एकदम? ये प्रकाश है, दृश्य प्रकाशता है, लेकिन प्रकाश सूर्य स्वरूप है, दृश्य रूप नहीं है। वैसे महाचिदाकाश दृश्य प्रकाशता है, लेकिन महाचिदाकाश है, दृश्य रूप नहीं है। जैसे महासागर तरंग प्रकाशता है तो महासागर है, वो तरंग नहीं है कि नहीं? महासागर तरंग नहीं है, ऐसे। तो वैसे तरंग में अकेला जगत नहीं लेने का, मैं पहले नंबर में लेने का। अनंत संपूर्ण अस्तित्व, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, टोटालिटी में रियलिटी, ट्रुथ, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जो है सो है। और अनंत संपूर्ण अस्तित्व, अहम दृश्य, टोटालिटी में अपीयरेंस, माने दिखा हुआ मात्र। और यदि जगत को अपीयरेंस गिना और अहम को ब्रह्म गिना तो उसकी खोपड़ी को ठिकाने लाना बहुत मुश्किल है। अहम भी दृश्य है, वो सूक्ष्म शरीर है, अहम मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो वो भी देह है और देह नहीं है, तो देह में है वो भी नहीं है। और महाचिदाकाश है। बोलो जी, स्वरूप मालूम पड़ता है? प्रक्रिया और इसमें क्या डिफरेंस है? प्रक्रिया ने क्या गफलत की है वो मालूम पड़ता है? क्या गफलत की है? जो अंतःकरण की वृत्ति है, तो जो कल्पना, संकल्प कल्पना है, जो भ्रांति है, वो कुछ नहीं है, उसको ब्रह्म कहा है। तो वो जो सच्चा महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश है, उसको भी नहीं गिनता है। अहम महाचिदाकाश को नहीं गिनता, और महाचिदाकाश में अहम कुछ नहीं है। क्या तो विवर्त है, सूक्ष्म कारण समष्टि व्यक्ति, वो तो विवर्त है, तो आभास मात्र, कुछ नहीं। आभास को चिदाकाश कहना और सच्चे चिदाकाश को कुछ नहीं कहना,
यह अहम का काम है। अहम कैसे पहचाना जाता है कि सच्चा महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है तो उसको वो अवहेलना क्या बोलते हैं, उड़ाता है, अवहेलना हाँ? अवहेलना करता है, उसको विरोध लगता है, उसको ऐसा उल्टा पड़ता है। और उसको अहम को आप चिदाकाश कहो तो उसको हाँ ये बराबर यहाँ गफलत यहाँ है ना, गड़बड़ यहाँ है। तो सच्चा जो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है उसमें अहम नहीं होता है। और जहाँ अहम होता है तो वो सच्चा महाचिदाकाश जो स्वयं प्रकाश है उसको वो अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, क्योंकि अहम नहीं है, वो करता है। और अहम है उसको महाचिदाकाश गिनता है, तो सच्चा महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश है उसको नहीं गिनता है। समझ में आता है? तो इसलिए जिसको ये मालूम पड़ गया विवेक कि अहम तो अंतःकरण की वृत्ति है, ये तो संकल्प कल्पना है, ये तो विवर्त है, बस ये नहीं है। और ये तो नाशवंत है, मिथ्या क्षण भंगुर, और ये तो अविनाशी है, और ये तो निरंतर निराकार निर्विकार है, उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, अनंत भरपूर है। और ये तो इतना ही देह के साथ ही है, और हम देह के साथ है, महाचिदाकाश में नहीं है। मालूम पड़े तो बुद्धू को भी मालूम पड़े ऐसा है, मूर्ख को भी मालूम पड़े ऐसा है। चलिए, यदि ये अमृत जैसा लगे तो समझना अहम नहीं है, यदि ये जहर जैसा लगे तो समझना अहम है कि नहीं? वो सिर में सब ठग पकड़ जाते हैं। चलिए जी, इसको उड़ाने को करता है तो समझ लेना अहम है, और इससे शांत होता है तो समझना महाचिदाकाश है। ऐसा प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ में नहीं रह सकते, वैसे महाचिदाकाश और अहम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। क्यों कि दो है ही नहीं। महाचिदाकाश में महाचिदाकाश और अहम दो नहीं है, महाचिदाकाश है, अहम नहीं है। आकाश और उसमें काली टिप की कलंक दो नहीं है, आकाश है, काली टिप की कलंक नहीं है। चलिए, ગિરી ગિરિવરોના ઘન વનોમાં આવેલા ગામો શીતળતા અને સુગંધ નામના પોતાના આદિ ગુણથી ચંદ્રનો પણ પરાજય કરે છે, કેમ કે તેમાં અનેક પ્રકારના વિકસિત થયેલા પુષ્પોના સમૂહમાંથી સુગંધ શીતળતા આદિ સારને ખેંચી લાવનાર પવન વડે લતાઓના પલ્લવોને હલાવીને નીચે બેઠેલા પથિકોના અંગને શીતળ કરે છે, અને જળને તથા તેની શીતળતાને ચારે બાજુ પસારી દેનારા વાયુના પ્રસાર વડે તેમના જળાશયો ચપળ તરંગોને ધારણ કરી રહ્યા છે. વળી આ પર્વત પાસેના આ ગામો શબ્દ કરેલા ઝરણાના જળ વડે રમણીય છે, અને ચારે બાજુ પ્રસરી રહેલા વિકસિત પુષ્પવાળા કાળ વૃક્ષોથી સુશોભિત છે. લીલા માત્રથી જ વિકસિત થઈ રહેલા પુષ્પો તથા પલ્લવોથી ડચી પડેલી લતાઓના ચંદ્રમા વડે તેઓ આકાશને अड़की गया है। एक विवेक अंदर से प्रकाश से हो जाता है ना, तो यह सब देखो दो वस्तु है कि एक वस्तु है, तो प्रकाश प्रकाशता है, ये आभास प्रकाशता है, चिदाकाश और चिदाभास। तो चिदाकाश में चिदाकाश और चिदाभास दो है कि चिदाकाश में चिदाकाश ही है, चिदाकाश में चिदाकाश और चिदाकाश चिदाभास दो है कि चिदाकाश में चिदाकाश ही है। तो अभी चिदाकाश वो तो प्रकाश है और आभास कोई प्रकाश नहीं है, तो ये प्रकाश रहा है, वो प्रकाश रहा है कि आभास प्रकाश रहा है, जो है वो प्रकाश रहा है कि जो नहीं है वो प्रकाश रहा है, वो प्रकाश है वो प्रकाश रहा। हाँ, तो उसमें नहीं है वो है नहीं है। हाँ, तो नहीं है का भ्रम रखना, उसको अपने साथ जोड़ना, उसको मैं करना, उसके पीछे दौड़ना, ये प्रकाश है कि भ्रांति है? और यदि ये सारा का सारा पूरा प्रकाश रहा है, प्रकाश प्रकाशता है, आभास नहीं प्रकाशता है, बिंब प्रकाशता है, प्रतिबिंब नहीं प्रकाशता है। तो ये सारा का सारा ये महाचिदाकाश बिंब है, परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति बिंब है। और ये जब जिसमें जो संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप रहा है,
तो उसमें परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति ही है, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं। आभास है ही नहीं, लेकिन भ्रांति होगी तो आभास दिखेगा, और भ्रांति ज़्यादा होगी तो आभास को अपने साथ जोड़ेगा, और भ्रांति ज़्यादा होगी तो उसमें मैं मेरा करेगा, और भ्रांति ज़्यादा होगी तो उसमें दुखी होके पड़ेगा। लाइन सर कॉन्सेक्वेंस, भ्रांति होगी न भ्रांति नहीं होगी तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है कि नहीं? एकदम डायरेक्ट, नो आई मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज, है ना? चलो क्लियर होता है? मान लो कि आपको अभी द्वैत भ्रम है कि प्रकाश और आभास, दृश्य माने आभास, बराबर? तो हमको तो लगता है कि ये दृश्य प्रकाश रहा है, तो प्रकाश प्रकाश रहा है, और प्रकाश में दो है, प्रकाश और आभास माने दृश्य, तो प्रकाश प्रकाश रहा है, और जो दृश्य जो आभास नहीं है तो वो नहीं प्रकाश रहा है। क्लियर है? द्वैत भ्रम है, चलो मान लिया कि ये दृश्य प्रकाश रहा है, ऐसा हमको दिखता है, ऐसा है ना? तो अब अंदर से जानिए, ज्ञान से प्रकाश से जानिए कि प्रकाश में प्रकाश और आभास, दृश्य माने आभास, तो दो है, बिंब और प्रतिबिंब तो दो है। अच्छा, तो कौन प्रकाश है? प्रकाश प्रकाश है। क्लियर है? प्रकाश प्रकाश है, आभास तो नहीं प्रकाश है। तो प्रकाश अपने को न जाने, ऐसा हो सकता है? प्रकाश तो ज्ञान है और आभास तो ज्ञान है, तो आभास तो ज्ञान है, तो वो तो अपने को नहीं जान सकता है। तो प्रकाश अपने को जाने वो ज्ञान है, ज्ञान को जाने वो ज्ञान है, ज्ञान आभास को जाने वो ज्ञान नहीं है, वो नैये को जाने तो वो ज्ञान है, नैये को अपने साथ जोड़े वो ज्ञान है, उसमें मैं मेरा करे वो ज्ञान है, उसमें दुख अशांति भोगे, अभाव मिटे नहीं, इच्छा पूरी हो नहीं, संतोष नहीं, शांति नहीं, अज्ञान अज्ञान अज्ञान। फिर क्या है? कितना भी भौतिक में कितना भी हो, लेकिन अंदर आभास भ्रम में मैं मेरा हो तो उसमें दुख और अशांति है, वो कुछ नहीं है, इसलिए अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं। और प्रकाश प्रकाश है, और प्रकाश में आभास कुछ नहीं है, द्वैत तो नहीं है, दो तो नहीं है। प्रकाश में प्रकाश और आभास, ये सूर्यनारायण भगवान का प्रकाश और ये दृश्य आभास, तो प्रकाश में दो तो नहीं है, प्रकाश ही है, ये दृश्य आभास तो नहीं है। फिर प्रकाश अपने को न जानकर, अपने को भूलकर, ये आवरण है, फिर अपने को दृश्य रूप जानकर और दृश्य में मैं मेरा कर कर, तो वो विक्षेप है और मन है, समझ आते हैं? और दुख है, वो अशांति है। और प्रकाश जैसे ही वो ज्ञान है, ज्ञान अपने को जाने, ज्ञान गम्यम, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम। तो ज्ञान, कृष्ण ने कहा कि परब्रह्म ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञान गम्य है। तो ज्ञान गम्य, ज्ञान ज्ञान से जाना जाता है, तो ज्ञान ज्ञान को जाने, तो उसमें आभास नहीं है, उसमें कोई अज्ञान नहीं है, कल्पना नहीं है, भ्रम नहीं है, मोह नहीं है, अविवेक विचार नहीं है, अविद्या ज्ञान माया नहीं है, तर्क संशय शंका नहीं है, वहम अंधश्रद्धा नहीं, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं है। तो ज्ञान महाचिदाकाश, महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश। तो प्रकाश प्रकाश से जाना जाता है, प्रकाश आभास से नहीं जाना जाता है, क्योंकि आभास कुछ नहीं है और प्रकाश सब कुछ है। तो सब कुछ है, सब कुछ ऐसे जाना जाता है, सब कुछ है, कुछ नहीं ऐसे नहीं जाना जाता है। और मैं कहे कि मैं सब जानता हूँ तो आभास है, सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर की वृत्ति है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अहंकार कहे मैं सच्चा हूँ, अभी वो कभी महाचिदाकाश जो सच्चा आ गया सामने तो उसको गिनेगा नहीं, और उसको मालूम पड़ जाए कि मैं तो एक बुलबुला हूँ अनंत महासागर में, एक परपोटा हुआ नहीं और फूटा नहीं, मैं कुछ नहीं है। महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है। तो जैसा ही मैं हटा नहीं तो महाचिदाकाश स्वयं प्रकाशता है। तो अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति, परम प्रकाश, परम आनंद, परम शांति, केवल प्रकाश, केवल आनंद, केवल शांति।
अहम को कभी, अहम कितना भी ब्रह्म बोले तो वो कभी ब्रह्म नहीं हो सकता, और ब्रह्म बोले अहम न बोले वो ब्रह्म ही है। अहम कितना भी ब्रह्म बोले वो ब्रह्म नहीं, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म अपने में अहम न बोले, मैं ब्रह्म न बोले तो भी वो ब्रह्म है, उसको अहम बोलना नहीं है। अहम अहम बोलता है, ब्रह्म कभी अहम नहीं बोलता है। ब्रह्म में अहम है ही नहीं, ब्रह्म अखंड है और अहम खंड है। तो खंड हो तो खंडित होने वाला ही है। सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं। अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है। अहम यदि ब्रह्म के साथ टैकल करने जाता है तो हमसे जो टकराएगा ब्रह्म में मिल जाएगा। चलिए जी चल। અને પર્વત ભાગમાં ઊંચા થઈ રહેલા તાલ વૃક્ષોમાં લટકી રહેલા મેઘો વડે સુશોભિત છે. अक्षर लिखो रखा था, हर दम में एक ही गम पूर्ण ब्रह्म ही हम। हर दम में एक ही गम पूर्ण ब्रह्म ही हम, है ना। જાણે ચંદ્રલોકના પવનના ભાગો જ હોય તેમ તેઓ ચંદ્રમાના અમૃતને શ્રવણાદ અસ્પદ વડે અનુમાનમાં આવતી બ્રહ્મલોકની પૃથ્વીને જીતે છે. નજીક આવી રહેલા તથા જળ વડે ભરેલા વાદળાની ઘટાઓથી જામેલા મેઘોની ગર્જના થાય છે, તેથી મયુરો નૃત્ય કરી રહે છે. એ નવીન નૃત્યને વિશે મયુરના સમૂહના કોમળ મોરપીંછો વિખેરાઈ જાય છે અને તેમાં રહેલી ગોળાકાર ટીલડીઓ મણીઓની જેમ ઝળકી રહે છે. આથી આ ગામડા સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ દશા ભોગવે છે. એક બાજુ સુંદર ચંદ્રમંડળ રૂપી આભૂષણ વડે સુશોભિત અને બીજી બાજુ વિશ્રાંત થઈ રહેલા તથા જળ વડે પરિપૂર્ણ ભરેલા વરસાદ રૂપી હાથીઓવાળા આ ગિરિગ્રામોમાં જે વિલાસ લક્ષ્મી ઝળહળે છે તે વૈભવવાળા બ્રહ્મદેવના રાજ્યોમાં પણ ક્યાંથી હોય. જાણે સુગંધ વડે સુશોભિત કોઈ નંદનવનનો અંદરનો ભાગ હોય તેવી સુંદર દેખાતી સંતાનક નામના કલ્પવૃક્ષની જાતિના ગુચ્છાઓને હસી કાઢનારા નિકુંજોથી સુશોભિત અને પુષ્પિત થઈ રહેલા તથા ગંભીર ગુંજારો કહેલા ભમરાઓથી આકુળ થયેલા લીમડાઓના કાંટા વૃક્ષોથી રમણીય લાગતી પર્વતની ગુફાઓ જોતા મારા चित्तમાં અપાર આનંદ થાય છે. टोटलिटी में रियलिटी कहना हो तो सब महाचिदाकाश है, एकदम सहज है कि नहीं। टोटलिटी में रियलिटी कहनी हो तो सब महाचिदाकाश है, एकदम सहज है। यहाँ सब वर्णन जो है वो दृश्य दृष्टि से नहीं है, महाचिदाकाश दृष्टि से सब महाचिदाकाश है, ऐसे दर्शन है। दृश्य दृष्टि से वर्णन होगा तो भ्रांति है, और महाचिदाकाश दृष्टि से वर्णन होगा तो महाचिदाकाश है। क्लियर है। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है कि उसमें यदि महाचिदाकाश दृष्टि से सब महाचिदाकाश एकदम सहज है, अनंत भरपूर है ना, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है, तो उसमें अनंत प्रकाश है, अनंत आनंद है, अनंत शांति है। और दृश्य दृष्टि से देखेंगे तो सब भ्रांति है, तो मोह, दुख, मलिनता, संताप है। दृश्य भ्रांति से सब देखेंगे तो मोह, दुख, मलिनता, संताप है। और महाचिदाकाश दृष्टि से सब देखेंगे सब महाचिदाकाश है, एकदम सहज है कि नहीं। तो क्या है, अनंत प्रकाश, अनंत आनंद, अनंत शांति। तो यदि अपने अपना प्रकाश, अपना अपना आनंद, अपनी अपनी शांति, अपना अपना अहम नहीं रहने से होता है, और अपना अपना मोह, दुख, मलिनता, संताप, अपना अपना अभाव नहीं मिटना, इच्छा पूरी नहीं होना, दुख शांति होनी हो, तो वो अपना अपना अहम है ना। तो उसका मतलब ऐसा कहते हैं ना कि सबका सत्य भी अपना और सबका असत्य भी अपना। अपने का दूसरा पर आरोप नहीं करने का, दूसरे का अपना पर आरोप नहीं लेने का। अपना जो है वो अपने को वो रहता है, मिलता है, दूसरे का अपने को नहीं रहता है, नहीं मिलता है। तो यदि हम सत्य है तो दूसरा देखने का ही नहीं है, सब सत्य है। हम असत्य है
तो दूसरा देखने का ही नहीं, सब सत्य है ना। तो जैसे हम रहेंगे वैसा सब हमको अनुभव में आएगा। तो हम महाचिदाकाश रहे हैं तो सब महाचिदाकाश है, अनुभव है ना। कोई कहेगा मैं हूँ, ऐसा हूँ ना वैसा हूँ, तो फिर वो परपोटा हुआ नहीं और फूटा नहीं। अहम बुलबुला बबल बुलबुल, तो अहम है वो परपोटा है, और महाचिदाकाश है ये महासागर है, महासागर सत्य है। अहम बुलबुला कुछ नहीं, महाचिदाकाश महासागर अनंत पूर्ण सत्य है, परम सत्य है, और अहम बुलबुला कुछ नहीं है ना। क्लियर? और पार चलो हरे